as SQC is the term used to describe the set of statistical tools used by quality professionals. Actually, how you see that the quality is within the parameter set. How much, if it too much goes beyond the upper limit or lower limit, then it is rejected. And here we use normal distribution. So this is the history. Javed, you read. Yes, ma'am. SQC was pioneered by the Walter A. Sheward at the Bell Laboratory in the early 1920s. Sheward developed the control chart in 1924 and the concept of the state of statistical control. The Sheward consulted with the Colonel Cecil Simon in the application of control chart of mentioning manufacturing of the army's picometry Arsenal. okay, arsenal in 1934. So Simon is a well-known name in your decision making also. So then came Edward Deming. You read it? Okay. Edward Deming invited Sheward to speak at the Graduate School of the U.S. Department of Agriculture and served as the editor of short book Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control in 1939, which was the result of the lecture of that lecture. Deming was an important architect of the quality control short courses that trained American industry in a new techniques during World War II. True. Deming traveled to Japan during the Allied occupations and met with the Union of Japanese Scientists and Engineers in an effort to introduce the SQC method to the Japanese industries. Actually, before that, Japan quality of Japanese good was not very up to the mark. Generally, people say, "Arey Japani maal hai," matlab it is not good. But due to Deming, he taught them statistical quality control, and they improved their quality level. And today we know that Japanese goods are supposed to be very good, of good quality. So what do we use in CQS? Read it. Okay. The SQCS categories. First is the descriptive statistics. Second is statistic process control (SPSC), and acceptance sampling. Sampling. So these three things we use. Now, what is descriptive statistics? Statistics which describes a group. What is its mean? What is its standard deviation? Yes, read it. Okay. Descriptive statistics are used to describe quality characteristics and relationships. Because when we compare two things, even if the mean is same, does not mean that both the population or sample, whatever you are taking, are same. Suppose two classes, they get the same mean. Say the mean of two classes A and B is 70%. But that does not mean that they are same, because maybe in one the variability is more. People who have got very high marks and also very low marks. In the other class, mostly people have got around 70. So that shows that there is a difference between. So to compare two things, you need both mean and standard deviation. So we use these characteristics, that is the measure of central tendency, which is mean, median, mode, or
characteristics of dispersions like range, standard deviation, and we take the ratio of these two to compare two population or two samples. Generally, we take these things: the mean, the range, the standard deviation. Read it. The mean measure of central tendency. Mhm. The range difference between the largest or smallest observation in a set of data. And Data. third is Suppose, standard deviation. hmm, Yeah, yeah. okay, continue. Okay. Standard Standard deviation deviation, measures the amount of data dispersions around dispersion, mean. mean. That means range is uh, in your class. Suppose someone has got the lowest marks is 50 and the highest is 90. So range is from 50 to 90. Like when somebody is conducting a interview, they are also advised to keep the range of marks between, say, it is out of 100, so maybe 30 to 80, something like that. So rarely anyone gets above 80 and below 30. They try to keep the marks between these two range. So range is a very important characteristic of any sample or population. Sample means you are taking a representative amount from the total population. And total population is the population which you are studying. Every time it is not possible because of the time and effort, money involved in studying the total population. So we take a representation of the total population. A standard deviation is when you measure the deviation from the mean. Suppose your mean comes, suppose there are four numbers, or maybe let's take two numbers only, 3 and 4. So mean will be 3.5, isn't it? So if you take the difference between 3 and 3.5 and 3 and 4, 3.5 and 4, whatever you take, you square it, because the difference can be negative and it can be positive, isn't it? So to make it positive, we square it and then add that up and then divide it by the number of observation. So that is known as the variation. And when we take the square root of that, that is known as standard deviation. So here, how you compute, this is mean. Mean is divided is equal to, if it is discrete, then what we do is add up all the observation and divide it by the number of observation. If it is continuous, then we make intervals and we take the central value of the interval plus the frequency, how many observation is, multiply it by it and then divide, add it and then divide it by the total number of observation. This is range. Here range is from 9 to 3. Difference between the highest, largest and the smallest observation. 9 is the largest and 3 is the smallest. So range is 6. 9 minus 3. This is standard deviation. Standard deviation is denoted by sigma. So it is xi, that is the observation value, minus x bar, which is the mean value. Then this observation can be both positive as well as negative. To make it positive, because we are taking the square root of it. So naturally, square root of a negative number will be imaginary. So we cannot take that. So that is why it is squared. So it becomes, this is when you
taking it for a sample, then you lose 1 degree of freedom and you don't divide it by n but n minus 1. What do you mean by losing 1 degree of freedom? Because, see, for example, suppose you want to hit out at someone, so you can use of both the hands and both the feet, so you have 4 degree of freedom. But suppose I tie up one of your hands or one of your leg, then you have lost 1 degree of freedom. Over here, once you have made fixed the sample size, then 1 degree of freedom is lost, and that is why you have over here, as a for population, it will be n, the total number of the population. But if it is for sample, it is n minus 1, because you have lost 1 degree of freedom. Standard deviation of a sample. X bar is the mean, xi is the observation, I is equal to 1 to n is the number of observation in the sample. Is it clear? Hello? Can't you hear me? Hello? Yes, ma'am. हेलो जावेद. Yeah, ma'am. तो ये क्लियर है ना? ये तो तुम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होगे. बिल्कुल बिल्कुल. Hmm? Actually, I was moved because I am in plant and there is a lot of noise here. Okay, okay. Okay. So read this: statistical policy process control. Who will read it? Okay. I will complete that one. Okay. Okay. Extend the use of the respective statistic to monitor the quality of the product and the process. Statistical process control help to determine the amount of variations to make sure the process in a state of control. So you want something. Suppose you want to have a cement bag of 40 kg each, but it won't be exactly 40 kg. Some might be 40.01, or it might be 39.88, something like that. It won't, not the all the bags will be of exactly. So how much variation you should allow so that it is acceptable? So it is in a state of control. We say if it is within the allowed limit, then it is in the state of control. Yes, continue. So variation in quality. Now two terms are exactly alike. Some sort of variations in the two items is bound to be there. In fact, it is an Integral. integral part of any manufacturing process. The difference in the characteristics known as the variation. The variations may be due to the standard quality of raw material, carelessness of the part of operator, fault in a machinery systems, etc. So you will not have, so some variation is always there. Maybe some variation is random, which you cannot control, and some variation are due to some cause. So variation is always there. Types of variations. Okay, there are two type of variations. Variations due to the change chance Chance. causes, and variations due to the assignable causes. So I said some variation you cannot have any control. It will happen. But some variation, like if there's some problem with the machine you are using, you can rectify that. Or maybe when you are measuring it, you are making certain mistakes. So you can rectify that. Some things you can rectify, but some variation you cannot rectify. Okay, variations due to the chance causes or common causes. Variations occur due to the chance. This variation is not due to the defect in machine, raw material, or any other factors. Behave in a random manner, negligible but
Okay, in a way. inventable. Okay, the process is said to be under the state of statistical control. So because of the chance, maybe because of uh, it can be any chance, natural chances, maybe you. So these are, you cannot totally eliminate it, but even then the process is under control. Variations This due is to the assignable assignable. Okay, causes. okay. Assignable causes, Read it. non-random causes like difference in a quality of raw material, difference in machine, difference in operator, difference of time. So these are some. So as I told you, we use normal deviation, not sorry, normal distribution to see whether the unit which you are Second. producing M44. is कौन बोल रहा है There is a shift change here, company. Uh, Gaurav, can you read next time? Next time. yes I can read. See, this curve is known as the normal curve. Here mean is equal to mode is equal to median. All three are equal, and this is symmetric curve. 50% lies below mean and 50% देखो can you see it? Can you see the screen? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, this is the curve. It is symmetric in nature. 50%, 50% of the items are below normal. Okay. So here the variation up till plus minus 3 sigma. This is normal, and about 97% of the population are within 97 plus minus 3 sigma. That means the whatever is the sigma for this particular uh, uh, population or sample. So it plus mean plus 3 sigma and or minus rep after the mean or before the mean. About 97%, that is the characteristics of this distribution lies. So we say ki, under these 97% is lies between, and which is variation due to normal causes. But beyond that, the variation is due to assignable causes. Read it. Specification and control limit. No item in the world can be a true copy of another item. It is not expressed in absolute value, but in terms of a range. For example, the diameter of a pen is expected by its manufacturing not as 7 mm but as 7 mm plus minus uh, 0.05. Thus, So the it diameter if it of a lies pen. within these two
range, then it is acceptable. Yes, continue. Thus, Thus, the diameter of a pen pen. Hello. produced by the manufacturer can vary from 6.95 mm to 7.05 mm. So because it is plus 0.05. So 7 plus 0.05 or 7 minus 0.05. So it comes to 6.95 to 7.05. So this is your curve. And you see this curve. This is your normal curve. This is the mean at the center. About 68% lies between plus minus. See, plus minus 1 sigma lies between 68%. So 68% of the, suppose you have 80, say 100 people. Actually, over here, this line does not touch x-axis. It touches x-axis at infinity. So it is said to be asymptotic. And even at plus infinity and minus infinity. One side we say minus infinity, which is less than uh, your mean, and plus, and which is more than the mean. So about 68% of the population lies between one plus minus 1 sigma. Suppose you have a population of 100 people, adults, say in a one. So there, if you study the distribution of the height, so there will be an average height. And if you calculate, you can also calculate its standard deviation. So you can say is 68 people height will be the mean plus minus 1 sigma. About 95% of the height of the people will have mean plus minus 2 sigma, and about 99.7% have the height of the people will be having height uh, mean plus minus 3 sigma. So this is almost 99.7%. So almost everything, like, because it cannot be 100. 100 is at minus infinity and plus infinity. So you cannot take 100%, but 99.7. So if 99%, and this is known as the lower limit, which is less than, here it is taken as, this is taken as less than mean, and this is taken as more than mean. So this is known as upper control limit, and this is known as lower control limit. So if the whatever you're manufacturing, if the sample tells you the value lies between these two things, then you say it is under control. See over here, take this example. Control limit is the mean, and upper control limit has been calculated at 16.2, and lower control limit has been calculated as 15.8. So one observation is more than 16.2. So this observation is out of control. We have got over here, we have got a very small sample from 1 to 6. Only 6 pieces are there. Just to explain it, I have taken a small. So if you draw it, the value, whatever you suppose it is the diameter of the a pen, or maybe a sack of cement, whatever it is, it is 16, so it must be something small only. So all these are lying between lower and upper control limit. Only one observation is out of control.
So keeping this in mind, we make control charts. Uh, Control this we chart. did. So sample data plotted on a graph with CL, UCL, and LCL. Control chart is Uh, variable are used to monitor characteristic that can be measured. That is length, width, diameter, time. Control hmm, chart are attribute are used to monitor characteristics that have discrete value and can be counted. That is percentage defective, number of flow in a shirt, number of broken eggs in a box. in a box. So this is attribute. This is not discrete. Here it can be measured. Here it can be counted. How many in a box? How many eggs are broken? So you cannot measure, count it. For or one or two or whatever it is. The example: defective number of flaws in a shirt. Suppose there is some weaving mistake in the shirt. There's some flaw. So that we can count. So attribute is you countable, and this is measurable. Actually, So MSA you और MSA and MSA करते हैं हम लोग वेरिएबल और एट्रीब्यूट फॉर एनी हाँ स्पेसिफिक डायमेंशन और हम्म फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हम्म या CTQ, मतलब जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उनके लिए हम लोग ये हाँ यूज करते हम्म, हाँ हैं, यूज एक्स बार करते हैं। और आर बार बराबर ये यूज करते तो दो तरह के कंट्रोल चार्ट्स है ना, एक्स बार चार्ट जहां हम मीन का करते हैं और आर हैं। है जी रेंज का करते हैं। जी जी जी। इट इज ये यूज टू MSA मॉनिटर। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग MSA और ये दो तीन लोगों को कंपैरिजन करते हैं कि हर एक का मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है पर्सन टू हाँ पर्सन और हाँ इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। हाँ इंस्ट्रूमेंट टू। तो दो तरह का कंट्रोल चार्ट है, एक्स बार चार्ट एंड आर बार चार्ट। मीन का है और ये रेंज का है, बिकॉज दीज आर द एट्रीब्यूट्स ना, मीन रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जी यस। दिस इज an example. Read it. कंस्ट्रक्शन Constructing constructing XOR chart, sigma is not given. given. A Sigma factory is standard produce deviation 50 cylinder, yes, 50 cylinders per hour. Hello. per hour. Sample of 10 cylinders every hour, and the diameter of Hmm. cylinders are uh, Measured. measured. Draw XOR and R chart and decided whether the process is under control or not. Hmm. This data is given to you. जैसे एक में आप देख, यू आर टेकिंग 10 सैंपल, सैंपल साइज आपका 10 है और उसमें 4 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं एक एक में। तो दिस आर द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 x4, दिस इज द डेटा यू हैव मेजर्ड। यहाँ फिर आपने इसको ऐड किया और फिर 4 से डिवाइड किया, तो मीन है आ गया। रेंज उसी तरह, हाईएस्ट क्या है Yes, 250 और 250, लोएस्ट है 230, उसका 230. 20, तो सबका रेंज भी निकाल लिया। Yes. हम्म, तो फिर you have added up the mean and also added up the range, because you have to divide the total with the number of observation. या मीन क्या था 2345.75, वही वैल्यू है यहाँ Yes, ma'am. 2345.7। इससे आपका टोटल मीन निकल गया, बिकॉज देयर वर 10 ऑब्जर्वेशन माने सैंपल्स, तो 10 से डिवाइड किया, तो यू हैव ग्रैंड मीन एज 234.75 and R similarly you have calculated। ठीक है,
आर को भी यस मैम, एड अप कर लिया, डिवाइडेड बाय एम नंबर ऑफ ऑब्जर्व सैंपल, 10 से तो यस 19.6 आया. यस एंड दिस इज द कंट्रोल चार्ट, क्योंकि इन ईच यू हैव टेकन 4, तो यू शुड टेक 4 के इस पे द वैल्यू ऑफ A2. एक कंट्रोल चार्ट जैसे नॉर्मल का भी क्या करते हैं, a standard normal chart is made for you. You have to convert whatever distribution you have into a standard normal distribution and take the value from the chart, जो हम लोग पर CPM में सीखे थे. तो 4 का A2 का वैल्यू 7.73 है, D3 0 है, D4 2.28 है. एक्स बार में दो कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था, एक्स डबल बार 234.75, और अपर लिमिट होता है, अपर और लोअर लिमिट क्या होगा, यही चीज प्लस और माइनस. यहाँ A2 इंटू आर बार भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो ये भी कैलकुलेट कर लिया है, प्लस A2 के वैल्यू हमने कंट्रोल चार्ट से लिया, और आर बार तो कैलकुलेट कर ही लिया था 19.6, तो आई एम गेटिंग अपर लिमिट एज 249.06. सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, ओनली थिंग फ्रॉम हियर इट इज प्लस, हियर इट इज माइनस, वी आर गेटिंग एज 220.7. 270. अब इसको आप मैप कीजिए, ये आपका सेंट्रल है और अपर है 250 तक और लोअर है 220 तक. कंट्रोल लिमिट है, अपर कंट्रोल लिमिट, सो लोअर कम. अब ईच 10 है ना एक में, तो 10 को आपने मैप किया तो इट इज ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल. ये थोड़ा सा बस लिमिट से बाहर गया है, बट ओनली 1 एंड दैट आल्सो स्लाइटली, सो दिस इज ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल. वो तो फॉर एक्स बार था, जब जो मीन था वो उसका हम लोग ले रहे थे. अब यदि आर का लेते हैं तो पहले तो आर का मीन लीजिए, विच केम टू 19.6, एंड अपर कंट्रोल लिमिट इज D4 आर बार and lower control limit is D3 R bar. So you just substitute the value of D4 from your control chart, and R bar का तो value मालूम ही है 19.6, so it is coming to 45.50, और lower control limit का 0 आ रहा है. तो रेंज कितना तक वैरी करना चाहिए, वो है वेट कितना तक वैरी करना चाहिए. If you draw, this is also under control. Range B is under control. Nothing is going beyond that. ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें सैंपल नंबर हम वी हैव टेकन अप टिल 25 और ईच में 4 ऑब्जर्वेशन. एवरेज निकाल लिया सबका, रेंज निकाल लिया सबका, then we have added it up, added the range up, so we can find out the X double bar and R bar. हम इसको मैम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड एक बार कीजिएगा. क्या प्रीवियस स्लाइड हमें लीजिएगा. सिग्मा यस, प्रीवियस ये वाला हम लोग, हाँ हम लोग इस तरीके से समझते हैं मैम. थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि नंबर 25 हमने किसी पार्ट का एक सैंपल लिया है, मतलब कोई नंबर ऑफ पार्ट 25 नंबर लिए, और ये 1 2 3 4 ये पर्सन है, 4 पर्सन है, फॉर पर्टिकुलर एक डायमेंशन होगी कोई. जैसे सैंपल जो आपने लिया ना, तो 25 सैंपल्स लिया और एक हाँ, मैं वही सैंपल कह में रहा हूँ. आपने 4 ऑब्जर्वेशन लिया. हाँ, और इसमें आपका सिग्मा दिया हुआ, पिछले वाले में सिग्मा नहीं पता था, व्हाट वाज द नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन.
हाँ मैं वही वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 25 हाँ सैंपल्स हैं, मतलब एक पार्ट के 25 कंपोनेंट हैं। हाँ ठीक है मैम। और 4 पर्सन है, एक डायमेंशन को 4 पर्सन अलग अलग लोग मेजर करते हैं, राइट? हम्म। यही है ना मैम? पर्टिकुलर नहीं, एक डायमेंशन को ही 4 लोग ये नहीं मतलब। है कि हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप एक पूरा पॉपुलेशन है, उससे आपने 25 सैंपल्स निकाले, हाँ, और 4 लोग अलग अलग मेजरमेंट किए। हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ मतलब मेरे पास कोई 1000 नंबर का लॉट आया, हाँ किसी पार्ट का मेरे पास 1000 नंबर आए, उसमें सैंपलिंग हाँ करके मैं 25 कलेक्ट किए। हाँ 25 कलेक्ट कलेक्ट करने किया। के बाद मेरे को एक, हम्म। उसमें से एक डायमेंशन को मेजर करना है। तो मैंने उसको हाँ 4 लोगों को अलग अलग, वही पार्ट मैंने 25 दिए और 4 लोगों को हाँ दे दिए। और हाँ। 4 लोग उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंसेस हम्म आ रहा है चारों का, हम्म। वो कैलकुलेशन ये आ रही है, ये मतलब जो रीडिंग आ रही है 1 2 3 4, ये चारों हाँ पर्सन की हाँ, अलग अलग आ रही है। अलग अलग आ रही है, ठीक जी, है। तो उसमें से एवरेज क्या आएगा और उसका रेंज क्या हाँ, आएगा, वो हम यहाँ से रेंज निकल क्या, जाएगा। हाँ, निकल गया, जी ठीक है। जी तो जी। इसको तो एवरेज को फिर सबको ऐड कर दिए हैं, और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, उसी तरह रेंज को भी कर लेंगे, मगर यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी पॉपुलेशन का भी अगर हम सैंपल पर निर्भर करते हैं ना, तो इट इज एस बाय रूट एन, एस इज आर बार बाय D2। तो वहां से हमने एक्स डबल बार निकाल लिया, जो टोटल ऐड करके उसको 25 है ऑब्जर्वेशन है, तो 25 से डिवाइड किया, तो इट इज कमिंग टू 15.95। द कंट्रोल लिमिट्स आर, ये तो एक्स डबल बार हुआ, प्लस, क्योंकि हम जेड यहाँ 3 लेते हैं, 3 से, क्योंकि कंट्रोल लिमिट जो है सो प्लस माइनस, क्योंकि इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलेशन 99.7, so that is almost, so we take z as 3। z का जहां वैल्यू होता है, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में हम करते हैं कि मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिस्क्रीट नंबर 1 2 3 4। तो जैसे 0 ± 1 होगा, तो विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 68% population will lie. If it ± 2, 2, so that means it is about 95%. And if it is ± 3, so it is 99.7. So we have taken 3 over here. हम देखना चाहते हैं कि टोटल, ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन किस रेंज में है, and this we have calculated 1.4 divided by root 4, क्योंकि एक में कितने थे, 4 थे, 4 लोगों से हमने करवाया था, और ये है आर का वैल्यू कहाँ निकाला है, यहाँ से निकाल लेंगे आर का 7.17 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से हमने अपर लिमिट, ये कंट्रोल लिमिट हो गया, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट, तो ये है, क्योंकि 15 पॉइंट ऐसे थोड़ा सा ज्यादा है, ये कंट्रोल लिमिट है, अपर कंट्रोल लिमिट इज दिस एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज दिस, and we see कि this take all the observable value of the from the sample, and we see कि it is within the control, ये तो काफी अंदर है कंट्रोल। Is it clear? Hello? यस सर। Hmm? So that was कंट्रोल control chart for और एट्रीब्यूट। mean and range.
मीन में एंड रेंज में भी आपका यह है कि once you know the standard deviation and in other you don't know the standard deviation, then you use control charts. When you don't know the standard deviation, you use control charts. When you know the standard deviation, then you don't use control charts. You have to find out the standard deviation. उसको प्लस माइनस करना पड़ता है, 3 लेते हैं क्योंकि we are trying to see what is the scenario for 99.7% of the population. ये attributes का है. So as I told you here, it is not measurable, it is countable. Attributes are discrete events. Yes, no, pass, fail, essay, true, false, something like that. Number of defects. So P charts are quality characteristics that are discrete and involves yes, no or good, bad decisions. Only दो ही है, binary है. जैसे number of leaking tubes, number of broken eggs, all these things. कोई एक and C charts are for more than broken है नहीं है. ये use C chart for discrete defects when there can be more than one defect per unit. जैसे किसी एक 1 square meter में कितने flaws हैं weaving में, number of complaints per customer at a hotel, something like that. So when that we use C charts. I guess read this. This is an example of C chart. A production manager of a BKT tire company has inspected the number of defective tires in 5 random samples with 20 tires in each sample. The table below shows the number of defective tires in each sample of 20 tires. Calculate the control limit. तो 20 लिए है ना number of samples. Yes. पहले sample में 3 था, 2 था and so on. Number of observation sample 20. तो fraction defective कितने हुए? 20 में 3 defective थे. 3 by 20. It is coming to, this is 2 by 20, that is 0.1, and this is 1 by 20. We have fraction defective we have calculated over here. So you have over here total number of defective 40 है, total number of the observation 400 है, fraction defective for each sample you have calculated. So जो control limit है, the mean, it is total number of defective tires divided by total number of observations. तो total number हमने देखा data से कि total number of defective tires was 40 and total number of observation was 400. तो control जो limit है, it is 0.10. और the formula for the standard deviation is P bar into 1 minus P bar, because 1 minus P bar means कि नहीं है, बाइनरी है ना, या तो डिफेक्टिव है या नहीं है, डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ P bar क्या है? 0.1. तो 1 minus P bar will be 0.9 divided by n is 20. So this standard deviation comes to 0.067. अब इसको बस सब्स्टिट्यूट करना है. P bar की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता ही है. Z will be 3 plus minus 3, 3 and minus 3, and this you have calculated 0.067. So this is coming to 0.301 and this is almost coming to tending to 0. It is 0.101. बहुत ही 0 के पास ही है, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है ना, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन तो हम नहीं लेते हैं ना, नेगेटिव तो नहीं लेंगे,
किसी के एट्रीब्यूट को, तो इसीलिए ये जीरो ले लेते हैं. In this example, the lower control limit is negative, which sometimes occurs because the computation is an approximation of the binomial distribution. ये but we cannot go into negative. Negative तो कोई चीज हम imagine नहीं कर सकते ना, उसको दिखानी physically नहीं possible है. So that is why we take it as zero. यहाँ जीरो हो गया तुम्हारा कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, और 0.301 है अपर कंट्रोल लिमिट, what we have calculated, and the this is your middle control limit, and you plot all the observation and see whether your production is within the control limits or something has gone beyond it. The number of weekly customer complaint are monitored in a large hotel using a C chart developed 3 sigma control limit using the data table below. So this is your data. वीक नंबर 1 2 3 to 20 वीक्स तक उन लोगों ने देखा. पहले में 3 था, फिर 2 था, फिर 3 है, 1 है, 3 है, so on so forth. तो टोटल इज 44 सॉरी. The average number of complaints per week is 44, तो टोटल कंट्रोल है. अब 20 वीक्स तक आपने ऑब्जर्व किया तो 2.2 एवरेज 2.2 आ रहा है. तो दैट इज यहाँ पर हम सी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह प्लस माइनस, तो z तो 3 minus 3. This is square root of 2.2. This is square root of 2.2. So you are getting again here it is negative. So it tends to 0. क्योंकि negative तो हो नहीं सकता है. So you have to see whether the complaint is within the limits or something has gone beyond it. If you map it over here, this shows that it is within the limit. Nothing has gone beyond it. If complaint was more than this, then that means कि you had to take some steps. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, आप बेस्ट से बेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ कंप्लेंट आ ही जाएगा. तो ऐसा होना चाहिए कि it should be within limit. Read this. Process capability. Evaluating the ability of a production process to meet or exceed preset specifications. This is called process capability. Product specifications, often called tolerances, are preset ranges of acceptable quality characteristics such as product dimensions. जैसे आप अपने एक प्रीसेट अपना बनाया कि हमें इस डायमेंशन का बनाना है, तो देखना है कि आपका जो प्रोसेस है whether it is within that range or it is going beyond that. Two part of process capability measure. First is measure the variable of the output of a process, and second compare that variability with a proposed specification or product tolerances. तो कितना variability or whether it is under control or not. Measuring process capability to produce an acceptable product, the process must be capable and it control before production begins.
So CP is USL and upper limit and lower limit divided by 6 sigma, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो दोनों को मिला के 3 + 3 6 हो जाता है ना, तो विद इन दैट रेंज 6 सिग्मा. Let's say that the specification for acceptable value of liquid is present at 16 ounces plus minus zero point 0.2 ounces, which is 15.8 and 16.2 ounces. प्लस माइनस हुआ ना, माइनस कर दोगे तो 15.8 है, प्लस है Yes, तो 15.2 ounces. yes. The process product 99.74% 3 sigma of the product with volumes between 15.8 and 16.2 ounces. तो CP is 1 over It here. is one. यहाँ अपर का लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ये 99.74, which is like almost. Do you accept it? The process produces 99.74 percentage of the product with the volume between 15.7 and 16.3 ounces. Then you don't accept it, क्योंकि ये जो आपका प्रीसेट है 15.8 था ना, 15.8 to 16.2, it is 16.2. going beyond that, Yes. between plus minus 3, it is from 15.7 to 16.3. If it is The greater than or production equal to, hmm, 15.9 and 16.1. हाँ, तो also you accept it, क्योंकि ठीक है आपका ऐसे था 15.8 and 16.2, वो उससे उसके विदिन ही है. If 1 होता तो it would have been 15.68 to 16.2. This is more, this is also more than 1, and this is less than 1. This is another example. Three bottling machine at Coca office are being evaluated for their capacity. Bottling machine ABC three machines हो गई. Starting deviation 0.5.1.2. Situations are set between 15 point and 16.2 ounce. Determine which of the machine are capable for producing within spec. Within specifications. Specification दिया है ना 15.8 and 16.2. 16.2. तो difference is 0.4, 16.2 minus 15.8, ये Hmm. 0.4 हुआ. Yes. अब ए बी सी है, सिग्मा तो दिया हुआ है 0.05, 0.1, 0.2. यूएसएल माइनस एल अपर और लोअर का डिफरेंस 0.4 है. अब इसको 3 सिग्मा से आप डिवाइड करेंगे तो सीपी यू गेट, क्योंकि इसका सिग्मा अलग अलग है ना, 0.05 है, 0.1 है, 0.2 है. इसको 3 सिग्मा से आप इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये वैल्यू निकालेंगे. तो इसका सीपी आ रहा है आपका 1.33, इसका 0.67, इसका 0.33. So it is more than 1. These two are less than 1. So you reject these two and you accept this.
Looking at the CP values, only machine A is capable of filling bottle within specifications, because it is the only machine that has a CP value at or above A. At A, 1 और above A आप accept करते हैं, 1 को भी accept करते हैं, above 1 को भी accept करते हैं. We have seen from this diagram. इसको भी accept करते हैं, इसको भी accept करते हैं. और जहां 1 से कम है उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं. इट गोज बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से ऊपर नीचे चला जा रहा है. ओवर हियर ओनली प्लांट ए, only plant A, CP is coming to 1.33. So you accept it. ऐसे एक्चुअल जब आप करें तो डेटा इतना छोटा नहीं रहेगा ना. There's something called acceptance theory, sampling. So you take a sample. So what you do is, there are two things. One is your producer's risk and another is your consumer risk. तो जैसे मान लीजिए आपने किसी सैंपल को एक्सेप्ट कर लिया, मगर उसमें कुछ डिफेक्ट निकला, तो दैट विल बी प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर रिस्क. टेल मी. प्रोड्यूसर्स रिस्क. हाँ, प्रोड्यूसर रिस्क होगा कि कंज्यूमर का? उसको खरीद लिया, कंज्यूमर तो ले लिया ना. कुछ गड़बड़ हुआ वो तो ठीक समझ के लिया, मगर गड़बड़ हो तो कंज्यूमर का रिस्क है ना. मगर सपोज it is good but it is not accepted, then it is producers. But it is under warranty that it can debit and return the product. वो तो अलग बात है, वो अलग बात है. यदि it is वारंटी के अंडर है, मगर प्रॉब्लम तो फेस करेगा ना, उसको चेंज करवाए. तो दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स रिस्क. कंज्यूमर जब एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हम किसी चीज को लेते हैं और इट हैज बीन एक्सेप्टेड बट समथिंग गोज रॉन्ग, देन इट इज अ कंज्यूमर्स रिस्क. इफ समथिंग इज ऑल राइट बट इज बीइंग रिजेक्टेड, तो प्रोड्यूसर का रिस्क है. अच्छा खासा वो अच्छा खासा consumer not calculate all these things because not known about these things. So this is a 100% responsibility to the producer at the time of the dispatch. We cannot do 100% inspection. हम लोग को हमेशा सैम्पलिंग करना पड़ता है, because that is not possible. नहीं करना पड़ता है ना तो सैम्पलिंग, but there is always a probability. होता है ना डिसीजन मेकिंग में. But we will frequently. There is always a probability of making an error. There are two types of error. One is when you accept something which is, एक तो ठीक है, it is you accept it and it is all right, तब तो कोई error नहीं है. But you have accepted but it is not good, then you have made type 1 error. If it is not good and you have not accepted it, then also you have not made any error, but you have
it is good and you have rejected it, then you have made type 2 error. There is always a probability of making an error. हम लोग ये error को भी जहां तक होता है we try to minimize it. कि ये बार बार होगा तो that means something is wrong with your sampling. कोई भी एरर 1 हो या 2 हो, किसी को तो उसका फिर भरपाई करना ही पड़ेगा ना. प्रोड्यूसर it is good and he has rejected it, it has been rejected, then what will happen? It will be the producer's loss. So in when So we take a all these things we are controlled through the quality systems, by the quality systems, हाँ, and we make the procedures to maintain the all these things, and हाँ, that doing is the correct. We exercise want to in monthly minimize basis generally. for all critical dimensions. हाँ, क्रिटिकल डायमेंशन, इसीलिए तो हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि अल्फा जो वैल्यू है, जो टाइप 1 एरर है अल्फा, इट इज मिनिमाइज्ड. मगर प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस कि ऐसा तो नहीं होता कि एवरी टाइम योर 100% तो नहीं रिजल्ट आता है ना हरदम. स्टैटिस्टिक्स Actually, में dimensions, ma'am, dimensions अब are not changed the frequently, because when we this last you will describe in slide process capability. And this is a exercise doing at the time of the development time, when the product is developed. प्रोसेस इज गोइंग ऑन. Yes, yes. So at that time, we are verify all these things and critical dimensions and fit and functions. So after that, when we start the productions, dimensions are very dimensions not change in frequently, because all the dyes and molds are not wear tear easily. हाँ, Mainly तो some दैट इज योर tolerances are ऑब्जेक्टिव. there. योर ऑब्जेक्टिव इज दैट कि कंट्रोल जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस करेंगे दैट शुड नॉट हैव फॉल्ट्स. Yes, इजंट इट? क्योंकि जो भी आप सैंपल चूज कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आप तो यही चाहेंगे कि ना वो एक्सेप्ट हो. मगर ऐसा तो नहीं है ना कि देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मेकिंग एन एरर. अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि 0 फॉल्ट, 6 सिग्मा क्या है कि 0 फॉल्ट. बट अभी भी वो दैट इज नॉट 100% पॉसिबल एवरीवेयर. definitely, ma'am. Not possible to 100. सम क्योंकि आफ्टर ऑल some error creep in even after your best of efforts. कभी ये भी नहीं कहते यदि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जा रही है तो दैट मीन समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग विथ योर प्रोसेस. बट वंस इन अ व्हाइल थिंग्स कैन गो रॉन्ग. So that making an error also you have to see whether it is controllable or not. एक्चुअली ये डिफेक्ट्स पास ऑन ना हो, इसीलिए हम ये सब प्रैक्टिसेस रेगुलर हाँ बेसिस पे करते करते हैं, हैं और करनी चाहिए. रेगुलर करनी चाहिए, वो यस, तो हम कह ही रहे हैं. हाँ, मगर इसीलिए ये प्रोसेसेस ऐसे क्वालिटी में बनाए गए हैं कि हम बनाए गए हैं कि नहीं हो. कंट्रोल, यस, कंट्रोल रहे हाँ, जो भी कंट्रोल प्रोसेस है. रहे. हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो क्वालिटी स्पेसिफाइड है उसी में निकले. यस, हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है. तो जो सैम्पलिंग अपना एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो सैम्पलिंग लॉट लिया तो उसमें से कोई ना कोई डायमेंशन एनजी होगी, तो वो सभी में होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि वो डाई से निकलना है, हाँ पार्ट वो को किसी से बनना है, तो उसमें सैम्पलिंग में आ जाएगा वो. हम्म, So we are capturing easily and rectify the issues. तो आपका मतलब कंज्यूमर रिस्क कुछ नहीं है. नहीं, कंज्यूमर रिस्क मैम जहाँ क्वालिटीज नहीं होती है, मतलब जो ये सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं क्वालिटी सिस्टम, डेफिनेटली
the तब past तो the बहुत ज्यादा yes, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, right, ma'am. बहुत Because ज्यादा we are doing प्रोबेबिलिटी। we are in automobile sector, and a हाँ single piece not acceptable the rejection, because the line of the suffer हाँ for अभी that हाँ product. हाँ। क्योंकि ऑटोमोबाइल में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, यू कैन जी, नॉट तो उसमें तो अफोर्ड अगर टू। एक हाँ। अगर हम्म कोई लॉट रिजेक्ट होता है तो पूरी लाइन हम्म। आपकी स्टॉप हो जाएगी, और वो बहुत बड़ा एक क्राइम हो जाएगा आपको ऑटोमोबाइल में, हाँ, अगर ऐसा होता है तो एक मगर कभी कभी ह्यूज अमाउंट ऑटोमोबाइल में डेबिट भी ह्यूज कुछ अमाउंट इतना डेबिट गड़बड़। फॉर दैट. हम्म। समटाइम्स दे हैव टू रिकॉल देयर प्रोडक्ट, उनका यदि यस, कुछ होता है तो फिर उनको दे हैव टू रेक्टिफाई एट रिकॉल द प्रोडक्ट, उसका जो भी when they डिफेक्ट recall है the उसको ठीक product, करना। all the cost for recall, and they give the हम्म। support and हाँ। change the part, all the cost हम्म debit for the for that uh, issues occur by any supplier. हम्म एक बहुत बड़ा अमाउंट में वो डेबिट करते हैं, तो इसलिए बहुत हम्म। सभी लोग जो है थोड़ा सा केयरिंग करते हैं पहले से, और इसीलिए हाँ। ऑटोमोबाइल स्पेशली आईएटीएफ आईएसओ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं. विदाउट हाँ। आईएटीएफ अभी तो ऐसा हो गया कि विदाउट आईएटीएफ क्वालिटी सिस्टम आपका वेंडर कोड ही नहीं खुलने वाला, आप सप्लाई नहीं कर हम्म सकते. हम्म। ऐसा है कि जब शुरू में ये इंडिका ही, तो आफ्टर सम टाइम्स देयर वर सो मेनी फॉल्ट, उनको काफी व्हीकल को रिकॉल करना पड़ा था, फिर ठीक यस करना सर. पड़ा था। उसके बाद दे हैव, उसके भी हुए कम से कम 20 साल से तो ज्यादा ही हो गया होगा। तो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड पीपल, द इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन दीज लाइंस कि जहां तक हो सके नहीं हो कुछ भी नहीं यस सर. डिफेक्ट्स आए। वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीरो डिफेक्ट। और इस तरीके की आज टेक्निक के थ्रू ही हम कंट्रोल कर पाते हैं. हाँ कर पाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इसी टेक्निक्स की वजह से ही जापान had started doing so well in the economy। यस सर. आज इतना ही रहने देता है। एक्चुअली इवन आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर लास्ट 4 days, वो ओके. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में गए हुए थे। ओके. I have returned today in the afternoon only। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है? ओके मैम. Okay, ma'am. ओके, गुड नाइट। गुड नाइट. Right, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट।